Hi, I'm Rajiv. मेरी जॉब की लगी पड़ी है, मेरी लव लाइफ की भी लगी पड़ी है, इनफैक्ट पूरी लाइफ की लगी पड़ी है। तो तू समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे स्किल्स, मेरे गैजेट्स, मेरी विजडम और ऑफ कोर्स मेरी बैट मोबाइल मिला के मैं बना बैटमैन और तू रॉबिन हुड पांडे स्मॉल टाइम। पहुंच गए दोस्त, पहुंच गए। ये क्या जगह डैड? अरे ये कमाल की जगह है, तू चल तो सही। अरे यार, first of all I want to eat something. Yeah, but first of all I want to feed your heart and your soul. Come on. Hi guys, we are at the Royal Enfield Garage Cafe in Goa and this is what it looks like. Whoops, but let's avoid this visual. PFD. Please find detached. See you in a bit. You're right yaar, ab bhook lag rahi hai. Hi sir. Hey, what's up? How are you doing, Blaise? Good sir. Your usual sir? Yes, of course. And for you sir? Array, is usual also. Okay sir. See you, jaldi laana, bhook lagi hai. Dad, I was going through the menu. अरे कोई किताब है going through? What's the problem? You just ordered for both of us. Yeah, I did. I can order for myself यार. Can you stop Dad's planning? तू पागल हो गया है क्या? अरे जो ऑर्डर किया तेरे लिए अच्छा लगेगा तुझे बेटा. But you are assuming that, no? Just relax यार. No, please. I am relaxed. But you have to listen this for once. Dad, यार अब हा हू ही करके हर बार अपनी बात नहीं मनवा सकते. And I feel so stupid agreeing to everything you say. How can you know what I was about to order? I was going to order a cheese and mushroom omelette. Can you know that? No, but you presumed. Why don't you ask? Where is all this coming from? What's happening with me and Riya? What's happening in my job? What's happening in my life? You don't ask, you presume. And then you crack stupid, not so funny jokes around it. But you'll just keep on presuming and you'll not ask. All I want for you is to ask me what's happening in my life. And not presume. Ask. फोन उठाता है तू मेरा? 100 बार फोन करता हूं तो एक बार उठाता है और तब भी कहता है कि डैड आई कांट डू एग्जैक्टली आई कांट डू दिस राइट नाउ. किससे पूछूं, क्या पूछूं? अरे यार वक्त होता नहीं है, निकालना पड़ता है. हमने तय किया था ना कि हर साल ऐसी ट्रिप करेंगे. 5 साल से प्लान कर रहा हूं, आज आया है तू और आज जाके तुझे वक्त मिला है. व्हाट डज दैट शो यू? You got to prioritize, son. But I am clearly not your priority. और तू मुझसे पूछ रहा है that. Don't do this, यार. Don't turn it around on me, okay? Cheese and mushroom omelette. Thanks, yaar. Thanks, Blaise. Enjoy your meal. Thanks. Cheese and mushroom omelette. कुछ चीजें एक बाप को बताने की जरूरत नहीं पड़ती.
मैं खाना खत्म करके बाहर आ जाना. I'll wait for you at the ferry. Hi, I'm Rajiv. मेरी जॉब की लगी पड़ी है, मेरी लव लाइफ की भी लगी पड़ी है, इनफैक्ट पूरी लाइफ की लगी पड़ी है. You know, I know what's wrong with my life generally. What I don't know is how to set it right. Or can I even set it right? That actually scares me a lot. But the good thing is I have a friend, a very good friend. हमेशा हंसता रहता है. Keeps calling me. और मैं उसके फ़ोन्स उठा नहीं पाता because I am normally busy या जो भी. But I know why he calls me. He calls me because he wants to check on me, how I am doing, if I am happy or not. And he does this, does all of this because I think he loves me. Actually, I know he loves me. But what he doesn't know is I love him more. बहुत ना केयरलेस भी है. अपना वॉलेट हर जगह भूल जाता है. I love you, Dad. And I miss you. I'm sorry. You never need to say sorry to your dad. You get that? अब इतना सियाना बनी गया है तो एक और बात बोलूं? थोड़े से आंसू रिया के लिए भी बचा के रख. सारे मेरे ऊपर खर्च कर देगा क्या? अब इसका तो मजाक मत उड़ाओ यार. I love you, Dad. Welcome home, son. Welcome home. अच्छा सुन, मैं क्या सोच रहा था? ये बड़ी क्यूट सी कहानी है तेरे बारे में. ये तो बतानी चाहिए ना सबको. कितना सेंसिटिव है. यार, I know you. आप बता भी दोगे. बस know that अगर आपने बताई ना, this is the last time I'm confiding in you. अरे सुन, प्रिया को तो बताने दे. let her come to know what a sensitive boy you are. नहीं बताओगे ना? बिल्कुल नहीं बताऊंगा. This is our little secret. Hey guys, hope you enjoyed our show. And if you enjoyed the show, please like and share it. Also subscribe to Arré for more such awesome content. Keep watching.